What is actually gland? The glands are first of all a structure which actually secretes some chemicals, and these chemicals may be that is juice with enzyme, or maybe it is hormone. So maybe it is the juice which contains the enzyme, or maybe the hormone which is secreted as in the form of chemicals. Second point, why we are discussing the glands under the epithelial tissue? Because the glands are epithelial origin. एपिथेलियल ऑरिजिन ये इंडिकेट करता है कि ग्लैंड्स आपकी बॉडी में जितने हैं, या इधर एक्टोडर्मल हो सकता है, या तो मेसोडर्मल हो सकता है, या तो एंडोडर्मल हो सकता है. मैं जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. एड्रिनल कॉर्टेक्स इज व्हाट? एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल. एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो क्या है? मेसोडर्मल है. बट एड्रिनल मेडुला क्या है? एक्टोडर्मल, एज इट इज लिंक डायरेक्टली विद द न्यूरल सिस्टम ऑफ योर बॉडी. क्योंकि एड्रिनल मेडुला जो हार्मोन सीक्रेट करता है, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, राइट, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद व्हाट? द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. यस और नो? दैट इज व्हाई द एड्रिनल मेडुला इज न्यूरोएक्टोडर्मल. इसीलिए उसको एक्टोडर्मल तो बोलते ही है, प्लस न्यूरोएक्टोडर्मल भी बोलते हैं. हम लोग इसको बाद में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे. But the fact is that every gland, either it is ectodermal or mesodermal or endodermal, as these three germ layer forms the epithelial tissue, that is why it is epithelial origin. Check. Now we are coming to classification of the gland. We are coming to the number one on the basis of that is number of cells present in the gland. First, number one, unicellular. Unicellular, as we know, that is only a single cell. Example क्या हो जाएगा? Goblet cell. Goblet cell secrete what? Immune cells. And second is multicellular. Multicellular, made up of many cells, all except goblet cell. All except goblet cell belongs to the multicellular gland. So ये था first classification. Now we are coming to number B, the second classification on the basis of nature of secretion. On the basis of nature of secretion. So that's under number one is merocrine. Number two, apocrine. And number three, holocrine. मैं डायग्रामेटिकली आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाए. एक्चुअली मान लेते हैं सपोज टू बी ये एक ग्लैंड है, and this is the structure of the gland. Before secretion, this is the secretion, during secretion, and this is after secretion. As you can see, after the secretion and before the secretion, gland में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है. There is no change to the gland. We can say the secretory substances which is secreted here, it directly released out. Gist क्या है? The gist ये है कि this type of gland can secrete non-stop. Because why? Now after secretion and before secretion there is no loss to the gland. When this kind of gland can be secrete the secretion non-stop for the uninterrupted time. इसीलिए
After the secretion also gland become unchanged, undamaged. Clear है? This type is called as what ना merocrine. Non-stop secretion करते हैं. Secrete continuously because there is no loss. तो एग्जाम्पल क्या देंगे हम लोग? ऑल ग्लैंड. सिर्फ दो ग्लैंड याद रखिए जो एपोक्राइन में आता है, होलोक्राइन में आता है. एपोक्राइन में एग्जाम्पल आपका मेमरी ग्लैंड आ जाएगा एंड होलोक्राइन में हो जाएगा ऑयल ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड. ये दोनों ग्लैंड को छोड़ेंगे तो बाकी जितने भी ग्लैंड है सब किस में आ जाएगा? एपोक्राइन. इसलिए याद रखना भी इजी है, राइट? तो आप लिख सकते हैं लिवर, सैलिवरी, ठीक है, या दैट इज गैस्ट्रिक एटसेट्रा, कुछ भी लिखिए, बट खाली यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड इंक्लूडिंग होगा. एपोक्राइन में, होलोक्राइन में हो जाएगा सेबेशियस ग्लैंड. रेस्ट ऑल कम्स अंडर द मेरोक्राइन. मेरोक्राइन में देख लेते हैं, एपोक्राइन में देख लेते हैं. This is before, this is during, this is after secretion. As you can see, a apical part of the gland has been lost along with the secretion, right? That is why it is called as what? Na apocrine. Apical part lost along with the secretion. Example, mammary gland. होलोक्राइन, यहाँ पे क्या होता है ना, एंटायर ग्लैंड जो है वो लॉस हो जाएगा. Entire gland will be lost along with the secretion, so there will be nothing left. After the secretion there is nothing left. तो ये one secretion करेगा कि many times secretion करेगा? ये one secretion करेगा. So whole gland lost along with the secretion. Example, oil gland, otherwise क्या है? Sebaceous. Oil gland always called as sebaceous. कंप्लीट करके मुझे कंफर्म करिए. हो गया कंप्लीट? चलिए नेक्स्ट पेज. हो गया? सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. तो ये था सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नेचर. अभी हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ presence or absence of duct. Presence or absence of duct. Number one, exocrine gland. With duct ke without duct? With duct. And that is why exocrine glands are called as ducted gland or gland of external secretion.
एंडोक्राइन क्या हो जाएगा? डॉक्टिलियस ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रेशन। यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरनल का मतलब क्या है? आपके बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट में क्या सिक्रेट होता है? हार्मोन सिक्रेट होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रेशन सिक्रेट होता है? जैसे ऑयल हो गया, स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, ये सब क्या है? एक्सोक्राइन सिक्रेशन है कि एंडोक्राइन सिक्रेशन? दैट इज व्हाई इट इज एक्सोक्राइन और ग्लैंड ऑफ एक्सटर्नल सिक्रेशन, इसीलिए एक्सो बोलते हैं। ठीक है, क्राइन मतलब क्या होता है ना? सिक्रेशन। दे secrete juice which contains what? The enzyme to the nearly located। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है भाई, जिसको नियर बाय सिक्रेशन करना है, नियर बाय टारगेट ऑर्गन को रीच करना है, they must be secrete their secretory substances through the duct or through the blood circulation। जो नियर बाय टारगेट होगा वो अपना सिक्रेटरी सब्सटेंसेस किसके थ्रू सिक्रेट करेगा, किसके थ्रू रिलीज करेगा? थ्रू द डक्ट, क्योंकि डक्ट बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो सकता है। जो नियर बाय टारगेट होगा उसको टारगेट करने के लिए आपको क्या चाहिए ना? डक्ट चाहिए। बट इफ द सिक्रेशन इज टू बी रीच द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन थ्रू आउट द बॉडी सपोज टू, in that case we need to secrete it into what? The fluid which is circulating throughout the body, that is called as what? A tissue fluid। क्योंकि हमेशा याद रखिए ब्लड circulation occurs in the hair animals is closed, means gland के साथ भी blood का direct connection नहीं है। blood is always confined within the blood vessels। तो फिर हार्मोन ब्लड में कैसे आएगा? डायरेक्टली आएगा कि इनडायरेक्टली आएगा? थ्रू व्हाट? टिश्यू फ्लूइड। ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है और हम लोग इसी क्वेश्चंस को बनाते हैं गलत। सो क्वेश्चन पूछेगा कि एंडोक्राइन दे डायरेक्टली सिक्रेट इनटू द बॉडी फ्लूइड और इनडायरेक्टली सिक्रेट इनटू बॉडी फ्लूइड। इनडायरेक्ट, ये है आंसर। ठीक है, थोड़ा सा माइन्यूटली हर चीज को समझने से इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो सिक्रेट जूस एंजाइम टू द नियरली लोकेटेड टारगेट साइट और ऑर्गन टू duct is called as exocrine gland or ducted gland। Example: salivary, liver, gastric, oil gland, sweat gland। sweat gland का साइंटिफिक नेम क्या होगा? Pseudorophic। Pseudorophic gland, क्योंकि ऑयल ग्लैंड था सेबासियस, स्वेट ग्लैंड हो जाएगा pseudorophic। एटसेट्रा कर दो, आप लोगों को पता है बाकी सब। Now we are coming to number 2, endocrine। It is actually क्या? Without doubt, and that is why it is called as what? Ductless or gland of internal secretion। They pour, ये एनसीईआरटी का वर्ड है, their secretion into tissue fluid or interstitial fluid which diffused into blood circulation। It diffused into blood circulation to reach distantly located target organ। यहाँ पे मैंने तीन चीज मेंशन कर दिया कि ये क्या सिक्रेट करता है।
ना पहली बात है और देयर सिक्रेशन, यहाँ पे क्या होगा सिक्रेशन ना हार्मोन. What is the secretion? They are secreting hormone into the tissue fluid directly, but into the blood indirectly. इसमें डायरेक्ट सिक्रेट कर रहा है टिश्यू फ्लूइड, ब्लड में कैसे सिक्रेट कर रहा है इनडायरेक्टली थ्रू टिश्यू फ्लूइड, राइट, टू रीच द डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन विदाउट एनी डक्ट. एग्जांपल ऑफ दीजिए पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, etc. Now number 3, heterocrine or mix. ये क्या होगा? Partly exocrine and partly endocrine. तो ये बोथ सीक्रेट करेगा ना जूस एंड हार्मोन. एग्जांपल क्या दे सकते? पैंक्रियास और गोनड्स. तो ये गोनड्स का डुअल फंक्शन है, गैमेटोजेनेसिस व्हिच इज एक्सोक्राइन फंक्शन. They also secrete the sex hormone, that is endocrine function, right? And also in addition to that, in case of pregnant women, it can be, that is what, the placenta. Placenta, that is also a type of what na mixed blend. एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, क्योंकि प्लेसेंटा का डुअल फंक्शन क्या है ना, एक तो ये एक्सचेंज का काम करता है, एक्सचेंज का काम करता है कि नहीं, यूजफुल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, एक्सचेंज करता है, प्लस दे आल्सो सीक्रेट सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स. दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, प्लेसेंटा. नाउ वी आर कमिंग टू number D. On the basis of what? On the basis of structure. The glands are of mainly two different types. One is tubular gland, another is alveolar or saccular gland. देखिए मैं यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, नाम हमने मेंशन किया क्योंकि इससे ज्यादा बहुत ज्यादा इलाबोरेट नहीं करना है. ट्यूबुलर ग्लैंड का मतलब क्या ना, दैट विल बी ट्यूब लाइक शेप, एंड एल्वियोलर का मतलब क्या ना, ये एल्वियोली लाइक शेप होता है और सैक लाइक होता है, दैट इज व्हाई इट इज व्हाट ना एल्वियोलर, एंड बोथ आर मल्टी सेलुलर. जिस ऑर्गन का स्ट्रक्चर जिस टाइप का हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम एक ही एग्जांपल दे रहे हैं ट्यूबुलर ग्लैंड में, मोस्ट प्रेफरेंसली वही चीज हम लोग को डिस्कशन करना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज व्हाट द क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल. क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल आप लोग पढ़े हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एज द इंटेस्टिनल ग्लैंड. द क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल दैट इज अ इंटेस्टिनल ग्लैंड व्हिच इज ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर. आप लोग सब देखे हैं, आपको याद नहीं आता है सही टाइम में सही चीज. आप ऐसे देखे होंगे कि ये है भिली, राइट, ऐसे भिलाई होता है कि नहीं, एंड दो भिलाई के बीच में ऐसे स्ट्रक्चर होता है. दिस इज व्हाट क्रिप्ट. क्रिप्ट मतलब जो इनर बिट होता है इन बिटवीन टू स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ना क्रिप्ट. हियर द क्रिप्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन व्हाट ना टू villi, and that is discovered by the scientist Leverkusen, so called as what na crypt of Leverkusen, and it is a part of intestinal gland. And alveolar gland का आप डायग्राम देख सकते हैं, ये alveolus टाइप का है, म्यूकस. सैलिवरी ग्लैंड हम लोग दे सकते हैं, सैलिवरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज सैक्युलर टाइप का होता है. वैसे देखा जाएगा तो ट्यूबुलर का भी बहुत वैरायटी है, सिंपल ट्यूबुलर, कॉइल्ड ट्यूबुलर, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, कंपाउंड ब्रांच्ड ट्यूबुलर. समझ में आ रहा है?
अगर सिंपल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम किया, ये क्या है ना, सिंपल ट्यूबुलर। अगर ये कॉइल्ड हो गया तो सिंपल कॉइल्ड ट्यूबुलर। अगर वन टाइम ब्रांचिंग हुआ तो सिंपल कॉइल्ड। अगर मेनी टाइम ब्रांचिंग हुआ तो कंपाउंड ट्यूबुलर। लाइकवाइज alveolar also different types: simple alveolar, simple branched alveolar, compound alveolar, compound tubular alveolar. So it is not the matter of question to discuss here, so just to skip it. Now we are coming to, ये हो गया आपका different type of gland, we have finished. Now we are coming to the last topic of the epithelial tissue, and that is what now? Cell junction. Actually cell junction mainly three types है. What are the three different type of cell junctions present? एक है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडेनिंग जंक्शन. मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे. मैं एक डायग्राम कर रहा हूँ. डायग्राम थोड़ा जल्दी जल्दी करना मेरे साथ. जंक्शन समझने में आपको इजी हो जाएगा बाय दिस.
एक्चुअली जो एडेरिंग जंक्शन है ना, बहुत सारे टाइप्स का है। कम से कम डायग्रामेटिकली हम लोग देखेंगे कि एडेरिंग जंक्शन कितने टाइप का हो सकता है। कभी कभी ये आइडिया आपको बहुत फायदा करेगा। यहाँ पे मैंने जितने भी जंक्शंस प्रेजेंट है मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन का कितना लेयर था? दो लेयर। क्या क्या था? हाँ, बेसल लेमिना एंड फाइब्रस लेमिना, which is close to epithelial tissue and which is close to the connective tissue. Very good. Now see, सब लोग को दिख रहा है? गुड। ये मैंने दो सेल बनाए हैं। दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल। दो सेल किया है मैंने, दिख रहा है? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज एक्चुअली टू सेल। दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल। ये सेल का न्यूक्लियस है, ये और एक सेल का न्यूक्लियस। दो सेल के बीच में क्या जंक्शन हो सकता है? अब समझ में आया? दो सेल के बीच में क्या क्या जंक्शन हो सकता है? नंबर वन, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट ना? हमेशा याद रखना, सेल के जंक्शन में सबसे टॉप में कौन रहेगा, सबसे ऊपर कौन रहेगा, ये आप चेंज नहीं कर सकते। सबसे ऊपर रहेगा टाइट जंक्शन, सबसे नीचे रहेगा हेमिडेस्मोस। ये फिक्स है। टाइट जंक्शन, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज व्हाट? जोन्युलर occludens। occludens होगा वो, जोन्युलर occludens। टाइट जंक्शन के नीचे आ जाएगा। दिस इज एक्चुअली intercellular breeze. This is gap junction. गैप जंक्शन को अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्सस। Now, this is actually protein plaque.
and this is microfilament. Protein plaque and microfilament. And that is together to form zonular adherens. Zonular adherens. Or intermediate junction. Zonular adherens or intermediate junction. ये है third junction. Now, this is also protein plaque. And this is tonofibrin. And this is intercellular protein junction. This is called as intercellular protein. Together to form the junction called as desmosome. Otherwise called as macular adherens. Macular adherens. उसके बाद ये जो जंक्शन है, this is called as interdigitation. And this one is hemidesmosome. नीचे अगर देखा जाएगा, then this part is called as what? एपिथेलियल के क्लोज कौन होता है? कौन सा होगा? बेसल लैमिना. एंड उसके नीचे क्या है ये? फाइब्रस लैमिना. ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. तो क्वेश्चन पूछेगा नेम द जंक्शन विच कनेक्टिंग द एपिथेलियल सेल्स विद द बेसल लैमिना. तो आंसर क्या होगा? हाँ, ये है क्वेश्चन. क्योंकि हेमिडेस्मोसोम पूरा एकदम बेस में रहेगा, तो एपिथेलियल सेल्स के साथ वो किसको कनेक्ट कर रहा है? बेसल लैमिना. क्लियर है? सो हेमिडेस्मोसोम इट इज एक्चुअली कनेक्ट, epithelium with basal lamina. कंप्लीट करके मुझे कंफर्म करिए. तो यहाँ पे एडहेरिंग जंक्शन टोटल कितना है? 1 2 3 4 and 5. How many adhering junctions are there? 5. Intercellular bridge, zonal adherents or intermediate junction, desmosome or macular adherents, interdigitation and hemidesmosome. बाकी टाइट जंक्शन हो गया, गैप जंक्शन हो गया. ठीक है. कंप्लीट है.
So now थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं इनका फंक्शन, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट इशू। पहले आते हैं टाइड जंक्शन। Actually stop the substances leaking across the cells or tissue. Just think about the sentence, मैंने क्या लिखा है? टाइड जंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? दो सेल के बीच में सब्सटेंस का जो मूवमेंट है, जो लीकेज है, उसको प्रिवेंट कर रहा है कि अलाउ कर रहा है? क्या कर रहा है? स्टॉप कर रहा है। So they actually stop the leaking across the cell. क्या लीक होगा? दो साइटोप्लाज्म के बीच में साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज हो सकता है मैक्सिमम। उस साइटोप्लाज्म एक्सचेंज को, ये लीकेज को प्रिवेंट कर रहा है। So what we can say, it is a communicable junction की नॉन कम्युनिकेबल जंक्शन? समझ में आ रहा है? इसको लीकेज जंक्शन बोलेंगे कि लीक प्रूफ जंक्शन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लीकेज। तो लीकेज को बंद कर रहा है ना, so that is why it is called as what? So called non communication junction or leak proof junction. कम्युनिकेशन जंक्शन वही होगा जो दो सेल के बीच में लीकेज को फैसिलिटेट करेगा, एंड कम्युनिकेशन तभी होगा जब दोनों के सेल में सब्सटेंस अलाउ होगा, एक्सचेंज होगा, एंड कम्युनिकेशन लीड्स टू व्हाट? ना कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑर्डिनेशन लीड्स टू व्हाट? वर्क एज ए यूनिट। पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि व्हाई द सेल्स and cells are coordinate with each other because of which junction? ना गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन क्या करता है? दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, एंड उसके बीच वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा तो कोऑर्डिनेशन होगा, एंड कोऑर्डिनेशन होगा तो उनके बीच में वर्क एज ए यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फैसिलिटेटेड होगा, दैट विल बी मोर स्ट्रांग। सो वी आर कमिंग टू द नंबर 2, दैट इज गैप जंक्शन। दिस अलाउ substance to exchange between the cells or tissue इम्यून मेनली कौन सा सब्सटेंस को अलाउ करता है? ना आयंस हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया, लार्ज मॉलिक्यूल हो गया, in between the cytoplasm of two cells the substance will be exchanged between the cells and tissue, then it is called as what? Communicable junction और क्या बोल सकते हैं? लीकेज। लीकेज जंक्शन। तो इसका मतलब है हम लोग नेक्स्ट में जो भी टिश्यू पढ़ेंगे, कभी भी मैं आपको क्वेश्चंस पूछूं कि दे आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर, मींस व्हिच टाइप ऑफ जंक्शन शुड बी अवेलेबल? डजंट कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर मींस व्हिच टाइप ऑफ जंक्शन इज प्रेजेंट? टाइड। ठीक है। नंबर 3, एडेनिन जंक्शन। act as cementing anchoring between the cells to hold tight. अब देखिए क्वेश्चंस बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा थोड़ा दिमाग लगाते हैं, स्मार्ट बच्चे ज्यादा होते हैं,
स्मार्टनेस उतना रखिए जितना जरूरी है, स्मार्टनेस बहुत ज्यादा हानिकारक है। क्या करते हैं बच्चे ना, ये टाइटली वर्ड को थोड़ा सा अलग वे में वो ले लेते हैं, बोलते हैं कि सर टाइटली मतलब टाइट जंक्शन। बोलते हैं कि जो टाइट जंक्शन है, टाइट का मतलब वो बहुत ही स्ट्रांग है, टाइट है, इसीलिए दोनों के बीच में ये क्या करता है ना, सीमेंटिंग का काम करता है। नहीं भाई, टाइट जंक्शन का फंक्शन अलग है एंड एंकरिंग और एडहरिंग जंक्शन का फंक्शन अलग है। मिसअंडरस्टैंड करेंगे तो पछताएंगे। मैंने स्ट्रेटली बोल दिया टाइटली। टाइट जंक्शंस आर एक्चुअली मेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द लीकेज एंड एडहरिंग जंक्शन का काम है एंकरेज और सीमेंटिंग। टाइट जंक्शन का काम बिल्कुल एंकरेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑलरेडी मैं बोल दिया हूं। इंटरमीडिएट जंक्शन, डेस्मोजम, that is the intercellular breach, interdigitation, and hemidesmos. These are the different type of adherin junction. So हम लोग junctions complete कर लिए। स्टडी में निकालिए पेज नंबर 5। स्टडी में पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1। एंडोथेलियम लाइनिंग ब्लड वेसल इज फॉर्म ऑफ, ऑलरेडी मैंने बोला था आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्वेश्चन नंबर 2, the cells of squamous epithelium are flat plate like. Question number 3, goblet cells are unicellular gland. Question number 4, simple epithelium is made up of compactly packed single layer of cells. Question number 5, just tell me the options. Compound squamous epithelium occurs in, that is present in the pharynx. Question number 6, the epithelium present in the innermost lining of mucosal layer of stomach and intestine is, actually क्या है ना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है म्यूकोसल एपिथेलियम ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन मींस ग्लैंडुलर। एंड मोस्टली मैंने आपको बताया था कि which type of cells act as a gland, now goblet cells, that is columnar, याद है, that is by the option 1 columnar. Question number 7, ciliated epithelium occurs in, option 3 bronchioles and fallopian tubes. Question number 8, microvilli of epithelial cells, yes, that is actually increase the surface area for the absorption purpose, option 1. Question number 9, junction help to stop the substances from leaking across the tissue. Right. Question number 10, which of the following is not a gland with duct? Gland does not have duct is क्या हो जाएगा ना, adrenal gland which is ductless. So we are coming to the next topic, connective tissue. मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था थोड़ा बहुत, एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। मेनली क्या है, connecting different structures. They will connect the different structures. और क्या होगा, supporting, packaging. जैसे कि एडिपोज टिश्यू क्या करता है ना, पैकेज का काम करता है कि नहीं, इंसुलेटर का भी काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, एंड ऑल दीज आर कम्स अंडर व्हाट ना, सपोर्टिंग। फ्रेमवर्क का काम करता है बिकॉज द बोन एंड कैटिलेज दे एक्ट एज अ फ्रेम ऑफ योर बॉडी, दैट इज व्हाट ना स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, सो सपोर्टिंग का काम करता है। एंड ऑलरेडी टोल्ड कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा जर्मिनल एपिथेलियम से बना है, मेसोडर्म।
and it is actually the most abundant tissue. सबसे ज्यादा कौन सा बॉडी में आपका टिश्यू प्रेजेंट? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, कौन सा होगा? कनेक्टिव। मोस्ट अबाउंडेंट and widely distributed. Most abundant and widely distributed tissue present in the body is connective tissue. ठीक है? Large intercellular space होगा कि less intercellular space होगा? सेल और सेल के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप होता है, तो गैप होगा तो large intercellular space means more matrix की less. Yes. Large intercellular space with matrix. What is actually the matrix? Matrix का definition क्या होगा? उसका explanation क्या होगा? Ground substance. This is actually ground substance. This is actually non-cellular. So matrix is not form of cell. Matrix is made up of cell product, right? जैसे कि हम लोग basement membrane पढ़े थे, it is not made up of cell. Although it is made up of what? Cell product. Likewise, a matrix is present in between the cells. So it is non-cellular. And क्योंकि ये दो सेल के बीच में है, तो ये बेस का काम करेगा कि नहीं? मतलब that is the reason why it is called as what? ना ground substance. हम पढ़ेंगे धीरे धीरे मैट्रिक्स के बारे में. So next is the connective tissue is composed of. Connective tissue में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है ना? मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर्स. हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट इज cells of connective tissue secretes both matrix and fiber except what? एक्सेप्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. The cells of the connective tissue secrete the matrix and fiber except blood. Means blood cells never secrete matrix, never secrete fiber, and that is why blood is fiberless connective tissue. ब्लड में कोई फाइबर है क्या? व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर, रेटिकुलर फाइबर. आप लोग कभी सुने हैं कि ब्लड में कंपोजिशन में फाइबर्स आते हैं? ब्लड की कंपोजिशन में क्या आता है? प्लाज्मा एंड कॉर्पस्कल्स. एंड कॉर्पस्कल्स हाउ मेनी टाइप? 3 डिफरेंट टाइप. व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स एंड यस थ्रोम्बोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो भाई ब्लड भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड तो क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. तो ब्लड में आपको मैंने बोल दिया कि दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. देन ब्लड का मैट्रिक्स कौन है? विच इज द मैट्रिक्स पार्ट ऑफ ब्लड? प्लाज्मा. क्योंकि सेल तो हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तो इन बिटवीन द सेल कौन रहेगा? प्लाज्मा. तो प्लाज्मा को आप लोग ग्राउंड सब्सटेंस बोल सकते हैं कि प्लाज्मा को हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि नहीं? क्या प्लाज्मा को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कोई तीनों में से कोई सिक्रेट करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट कोई तीनों में से कोई प्लाज्मा सिक्रेट करता है क्या? तो इसीलिए मैंने क्या लिखा? एक्सेप्ट. So all the cells of the connective tissue secrete both matrix and fiber except blood. So blood में matrix है, but matrix is not secreted by the cells of the connective tissue. Second है blood is without fiber, that is fiberless fluid connective tissue. Which one? The blood. हम पढ़ेंगे डिटेल्स में बाद में. We are coming to the types of the connective tissue. Dense connective tissue,
चलिए पहले लूज आते हैं फिर डेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, specialized connective tissue. Actually, loose and dense दोनों को मिला के बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। वाइट सो प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब क्या है? हर चीज में थोड़ा सा अगर मीनिंग समझने के लिए कोशिश करोगे ना बहुत इजी हो जाए। प्रॉपर मतलब ऑथेंटिक, प्रॉपर मतलब क्या है? प्योर, प्रॉपर। ये तो स्पेशलाइज्ड है भाई, ये क्या है? मॉडिफाइड है ये। तो विच इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर लूज एंड डेंस, क्योंकि वो मॉडिफाइड है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पे डिटेल्स नहीं, बिल्कुल नहीं लिख रहा हूँ मैं, डिटेल्स धीरे धीरे जाऊंगा। मैं यहाँ पे सीधा क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। लूज कनेक्टिव टिश्यू अगेन इन ऑफ टू टाइप, वन इज एरियोलर, another is adipose. And dense connective tissue, dense regular, and second is dense irregular. dense regular में दो चीज आता है, white fibrous and yellow elastic. तो white fibrous dense regular, yellow elastic dense regular. मीन्स व्हाइट फाइबरस में मोर व्हाइट फाइबर की येलो फाइबर? मोर व्हाइट फाइबर। जिसमें व्हाइट फाइबर ज्यादा होता है मतलब येलो फाइबर कम होगा। ऐसा नहीं कि व्हाइट फाइबरस मतलब ओनली व्हाइट फाइबर एंड एब्सेंस ऑफ येलो फाइबर, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई टेंडन में व्हाइट फाइबर ज्यादा है बट येलो फाइबर इज स्टिल प्रेजेंट। लिगामेंट में येलो फाइबर ज्यादा है बट व्हाइट फाइबर इज आल्सो प्रेजेंट, क्योंकि येलो फाइबर ज्यादा है इसीलिए इलास्टिक। इसीलिए क्या होगा ना, दैट इज जैसे कि व्हाइट फाइबर में टेंडन आता है, तो टेंडन क्या है? इलास्टिक होगा कि नॉन इलास्टिक होगा? लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक, क्योंकि येलो फाइबर कम है, इसीलिए थोड़ा सा लेस वाला। मोर ऑफन, लेस ऑफन, यूजुअली, विथ एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, ये सब वर्ड पे थोड़ा सा एग्जाम के टाइम में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना, नहीं तो माइनर मिस्टेक कॉमन मिस्टेक होता रहता है। तो व्हाइट फाइब्रस में कौन कौन आएगा एंड येलो फाइब्रस में कौन कौन आएगा हम बाद में बताएंगे। नाउ स्पेशलाइज्ड के अंदर कौन कौन आ जाएगा? स्पेशलाइज्ड के अंदर कौन कौन आएगा? एक तो स्केलेटल, दूसरा है वैस्कुलर। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, सॉरी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर स्केलेटल एंड वैस्कुलर। एंड स्केलेटल के अंदर दो चीज आएगा, कार्टिलेज एंड बोन। लाइकवाइज वैस्कुलर के अंदर क्या आ जाएगा? ना ब्लड and limbs. This is complete description of the classification of the connective tissue. Now we will go one by one. हम लोग स्टार्ट करते हैं लूज। लूज कनेक्टिव मतलब वाइड इज कॉल्ड एज लूज, वाइड इज कॉल्ड एज लूज। मोर मैट्रिक्स की लेस मैट्रिक्स, लेस लूज इसीलिए है क्योंकि इसमें मैट्रिक्स ज्यादा है। डेंस इसीलिए है क्योंकि मैट्रिक्स कम है।
तो डेंस होगा तो कम्पैक्टली अरेंज होगा कि लूजली अरेंज्ड होगा। अब वर्ड को आप लोग समझ नहीं रहे हो, वर्ड को खाली लर्न कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, जो पिछले साल किए थे वही गलती कर रहे हो। सेल्स and fibers are loosely arranged in matrix। यहाँ पे मैट्रिक्स का क्वांटिटी मोड है। वन बाय वन आते हैं, पहले सेल, सॉरी पहले मैट्रिक्स, देन सेल, देन फाइबर। फर्स्ट वी आर कमिंग टू मैट्रिक्स। अच्छा, लूज कनेक्टिविटी के अंडर फर्स्ट क्या है, कौन सा पहले आता है? एरियोलर। तो पहले एरियोलर आते हैं। Areolar connective tissue is one of the most abundant connective tissue present in the body. So most abundant and widely distributed connective tissue. So which is the most abundant connective tissue? Areolar. Which is the most widely distributed connective tissue? Areolar. देखिए ये मेनली करता क्या है, प्रेजेंट बिलो स्किन। स्किन के नीचे इसका फंक्शन क्या होगा? ना दैट एक्चुअली कनेक्ट द स्किन, जिसको हम लोग अदरवाइज बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, टू मसल्स। तो who connecting the muscles with skin? Areolar। ये है बिग क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। स्किन टू मसल्स कनेक्टेड बाय द एरियोलर। तो आप सोच सकते हैं अभी कि भाई मैंने लिखा था कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि आपके बॉडी में पूरा जो स्किन है उसके पूरा नीचे एरियोलर होगा, दैट इज व्हाई इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सेकंड, दिस इज एक्चुअली हेल्प्स इन द रिपेयरिंग मैकेनिज्म। ये रिपेयर भी करता है। So helps in the repair after the injury. Now we are coming to मैट्रिक्स। अभी हम लोग मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर के बारे में डिस्कसिंग करेंगे। नाउ कम्स टू द मैट्रिक्स फर्स्ट। ऑलरेडी मैंने लिख दिया है वहां पे कि मैट्रिक्स क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, नॉन सेलुलर की सेलुलर। सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल प्रोडक्ट, इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज दैट सेल प्रोडक्ट? ना म्यूकोपॉलीसेकेराइड। आप लोग बायोमोलिक्यूलर चैप्टर पे थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज दूंगा। एक्चुअली पॉलीसेकेराइड का मॉडिफाइड फॉर्म है म्यूकोपॉलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। Mucopolysaccharide and glycoprotein, they actually compose to form the matrix, which is actually a non-cellular ground substance made up of cell product. And कौन सा cell product? Mucopolysaccharide and glycoprotein. So this is actually the matrix. Second, we are coming to the different type of cells. Cells में first आते हैं number 1, फटाफट लिखिएगा, फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट। फाइब्रोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका फंक्शन क्या है। क्या करेगा? फाइबर, मैंने लिखा था कि ऑल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, सॉरी कनेक्ट सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट मैट्रिक्स एंड व्हिच सेल? फाइब्रोब्लास्ट दैट एक्चुअली सीक्रेट मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। नंबर 2,
मैक्रोफेज और मैक्रोफेज का साइंटिफिक नेम क्या है? वेरी गुड, हिस्टियोसाइट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट? क्या फैगोसाइट करता है? सेल डेब्रिस. सेल डेब्रिस मतलब सेल का जो वेस्ट है, सेल डेब्रिस, दैट इज फॉरेन एजेंट. फॉरेन एजेंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा, एलर्जेन आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, एवरीथिंग इज कम्स अंडर व्हाट? ना द फॉरेन एजेंट. सो फैगोसाइट द सेल डेब्रिस एज वेल एज द फॉरेन सब्सटेंसेस और एजेंट. तो मेनली इसका फैगोसाइटिक रोल है. नंबर 3, मास्ट सेल, otherwise called as what? Mechanocyte. मास्ट सेल otherwise called as what ना? Mechanocyte. क्या सिक्रेट करता है? हेपारिन. हेपारिन क्या है? एंटी कोआगुलेंट. Then what secret next? और क्या सिक्रेट करेगा? हिस्टामिन. हिस्टामिन इज वैसोडायलेटर की वैसोकंस्ट्रिक्टर. वैसोडायलेटर. They also secrete what? Serotonin. Serotonin is just opposite to histamine. What? Act as vasodilator की constrictor. Vasoconstrictor during excess bleeding. Supposed to be a person meet an accident and that results into, accident अगर severe होता है तो कुछ देर के बाद उसका death भी हो सकता है. Because of what? Because of the excessive loss of the blood from the body. Because blood loss हो गया तो pressure क्या होगा ना? Drastically decrease करेगा. And pressure decrease होने से क्या होगा ना? Cardiac activity, respiration, everything will be disturbed and leads to death. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, कॉर्टिसोल हार्मोन. हर चैप्टर के साथ एक दूसरे का लिंक है, बस सुनते जाइए क्लास में. मैंने आपको क्लियर कट बोला था, आप लोग का मेन प्रायोरिटी क्या है? सुनना, समझना, उसको अपने दिमाग में ठूसना. ठीक है. फर्स्ट क्या है ना? दैट इज cortisol hormone. नाम सुने हो? It is secreted from what? Na, adrenal cortex. Right. Which hormone is called as life-saving hormone? Why cortisol is called as life-saving hormone? Because it is act as a vasoconstrictor. Excessive bleeding हो रहा है तो आपका बॉडी में vasodilator होना चाहिए कि constrictor होना चाहिए? So that the excessive bleeding can be prevented and the pressure could be managed to normal. क्योंकि प्रेशर डाउन हो रहा है धीरे धीरे ब्लीडिंग होने की वजह से. ये वैसो कंस्ट्रिक्टर करेगा तो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा ना? ल्यूमेन नैरो हो जाएगा. ल्यूमेन नैरो होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा. सेकेंडली ब्लड फ्लो कम होगा. So they can prevent the excessive bleeding and also increase the blood pressure. That is why the cortisol is called as life saving hormone. सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन आपका बॉडी में cortisol. And यहाँ पे और कौन है? Serotonin, which is also act as a vasoconstrictor during the excessive bleeding. अभी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है कि which blood cell also act as mast cell? Which blood cell act as mast cell? Basophil. WBC में बेटा 5 सेल आते हैं. क्या क्या? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, lymphocyte and macrophage. That is what? Na, monocyte. So which blood cell act as a mast cell? Basophil. क्योंकि basophil same heparin, histamine and serotonin, ये तीनों same secret also from what? Na, basophils. Number 4. Plasma or cartwheel cell.
प्लाज्मा और कार्ट व्हील सेल। आप लोग देखे हो ना, कार्ट जो बैलगाड़ी देखे हो? आप कहाँ देखे हो? देखे हो ना? उसका जो पहिया होता है, उसका जो व्हील है, उसके जैसे ही दिखता है प्लाज्मा सेल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्ट व्हील सेल, लाइक दिस। इसको इसीलिए बोलते हैं कार्ट व्हील सेल। मेनली आप लोग 12th में क्लियरली पढ़े हो कि विच सेल सीक्रेट एंटीबॉडी। कौन सा? प्लाज्मा। 12th का टॉपिक है इम्यून सिस्टम। It actually secretes what na antibodies. कंप्लीट है? नेक्स्ट पेज में मूव करें। गुड। It also with lymphocyte, adipocyte, mesenchyme, chromatophore cells, blood cells like your neutrophil। क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सा डब्ल्यूबीसी का प्रेजेंट होता है? आरबीसी तो यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट होगा ही, लेकिन कौन सा डब्ल्यूबीसी का परसेंटेज सबसे हाईएस्ट है? न्यूट्रोफिल। अब थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लिम्फोसाइट रोल क्या है? ना फैगोसाइटोसिस। एडिपोसाइट क्या है? फैट स्टोरेज। मेसेंकाइम का रोल क्या है? ना टोटिपोटेंट्स। टोटिपोटेंट है मतलब ये रीजनरेशन कर सकता है कि न्यू कनेक्टिव टिश्यू सेल रीजनरेटेड फ्रॉम व्हाट? मेसेंकाइम। तो मेसेंकाइम टोटिपोटेंट सेल है that acts as a stem cell to replace the damaged connective tissue cells to form the new connective tissue cell, mesenchyme। क्रोमैटोफोर क्या है? ना पिगमेंटेड सेल है। Who gives the color to the different type of connective tissue? ना pigmented cell called as what? Chromatophore। बाकी ब्लड से हो गया। ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द कंपोजिशन। ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। जब नीट नहीं बना था, एआईपीएमटी में ये क्वेश्चंस आ चुका है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेल्स कम्स अंडर द एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, राइट? अभी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, बाद में हम जाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। मैं थोड़ा डायग्राम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको लर्निंग करके समझा दूंगा।
मेनली मैं यहाँ पे मेन सेल्स का डायग्राम किया हूँ, लेकिन बाकी जितना मैंने लिखाया है, ऑल द सेल्स आर प्रेजेंट इन द एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। So this is actually the dotted में किया हूँ, this is actually matrix. Matrix it is intercellular की intracellular. Matrix क्या हो गया? Intercellular ground substance present in between the cells, which is actually formed of the cell product. Now comes to the labeling part. Main मैंने यहाँ पे किया है labeling. Diagram. This is actually fibroblast. This is mast cell जिसमें किडनी सेप्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है. This is plasma cell. This is macrophage. This is white fiber or collagen fiber. This is yellow fiber or elastic fiber. This is blood cell, जैसे कि मैंने बोला, न्यूट्रोफिल आप बोल सकते हैं इसको. All the blood cells are present here because the blood supply यहाँ पे हुआ है. जहाँ पे blood supply नहीं है, avascular है, वहाँ पे blood cell absent होगा. But as it is, that is what vascular. So it is with the different type of cell and most maximum percentage किसका रहेगा ना, neutrophil cells. Apart from the RBCs. RBC यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि RBC मैट्रिक्स में नहीं आएगा. Which cell can we go for the diabetes? RBC की WBC. तो इसीलिए आपको मैट्रिक्स में WBC दिखेगा. मैट्रिक्स में RBC नहीं दिखेगा. मैट्रिक्स में सिर्फ WBC दिखेगा जो ब्लड सेल से बाहर आ सकता है. क्लियर है? And this is no doubt matrix. What is the difference between the white fiber and yellow fiber here? White fiber क्या है? बंडल में है, सिंगल है कि बंडल है? येलो फाइबर क्या है? सिंगल. व्हाइट फाइबर वेवी, येलो फाइबर ब्रांच्ड, स्ट्रेट, ब्रांच्ड. थिक कौन है? व्हाइट फाइबर की येलो फाइबर? येलो फाइबर थिक है, व्हाइट फाइबर थीन है. दिख रहा है कि नहीं? हाँ. इसलिए ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो. तो नाउ वी आर कमिंग टू, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हो गया. नाउ वी आर कमिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर. फाइबर में नंबर 1 व्हाइट और कोलेजन फाइबर. Formed of collagen protein. Formed of collagen protein. Heme in bundle. Wavy. Unbranched. Tough. Inelastic. So this is the character of white or collagen fiber. Thin है, bundle में present होगा, wavy होगा, unbranched, tough and inelastic. तो white fiber ज्यादा होगा तो क्या होगा ना, बहुत ही tough होता है वो टिश्यू. अगर येलो फाइबर ज्यादा हुआ तो रिवर्स हो जाएगा, that is elastic. So number 2.
येलो और इलास्टिक फाइबर इज मेड अप ऑफ व्हाट? कौन सा प्रोटीन से बनता है ये? इलास्टिन प्रोटीन। एक सिंगल स्ट्रेट ब्रांच इलास्टिक फ्लेक्सिबल सॉफ्ट। बाकी और एक फाइबर है, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज रेटिकुलर फाइबर। जैसे मैंने आपको बोला था ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू लेयर, फाइब्रस लैमिना एंड बेसल लैमिना। एंड द फाइब्रस लैमिना में क्लियरली मैंने लिखाया था इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर लिखाया था। मींस ये इंडिकेट करता है कि कनेक्टिव टिश्यू आल्सो कंटेन्स रेटिकुलर फाइबर। बहुत ही कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, इसलिए स्किप कर रहा हूँ। किसी कोई दिक्कत है? जैसा नो, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये क्या कंप्लीट हुआ? एरियोलर। बचा क्या नेक्स्ट में? एडिपोज। एडिपोज टिश्यू एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है? मैं लोकेशन लिख देता हूँ, प्रेजेंट बिलो स्किन। What is the role of the adipose tissue present in the skin? Anybody? How they maintain the temperature? शॉक है, शॉक एब्जॉर्प्शन से टेम्परेचर का क्या रोल है? हाँ, वाह। एनीबडी एल्स? तो बढ़िया, तो एसोसिएशन क्वेश्चन करेगा फिर, कंसेप्ट ही रॉन्ग है। बिकॉज इट इज इंसुलेटेड टू हीट, बिकॉज इट इज हीट इंसुलेटर। अगर हीट इंसुलेटर होगा तो वो टेम्परेचर को लॉस करने देगा क्या? The temperature will be retained in the body temperature will be constant. So it is the reason why we are homeothermic. Clear है? जिसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसका हीट लॉस हो जाता है। एंड हीट लॉस होने का मेन कारण क्या है? मतलब स्किन के नीचे यहाँ पे मैरिपो टिश्यू या तो कम है या तो एब्सेंट है। सेकेंड है, इट इज एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, so they will protect the innerly located visceral organs of the body. That is why it is present around eye, heart, kidney, etc. दो चीज present below the skin. Why it is so? It is act as shock absorber and act as heat insulator. दो काम, कंसेप्ट हमने बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम उसको एडिपोज टिश्यू का पूरा टाइप्स बताएंगे, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, येलो एडिपोज टिश्यू विद डायग्राम एंड